में क्यों रहा 4-3 बजे से अरे लाइव क्यों कविन कधीतरी हाँ कविन I just do like this ना चालत नाही बऱ्याचदा but every time mummy does something something to me ने कधी आपल्याला कॅमेरा बेटा आपण कधी बघितला नाहीये नुसतं त्याचं हे जर हा तोच असला तर अनुष्का पण थोडी उशीर Kanushka, you must have missed a little first part, right? Kanushka? Yeah, what I will do is that I will send one file to you. ऐसे ही मैं ओरली कुछ बोलूंगा और वो सब मैं तेरे को भेज दूंगा ओके 1 or 2 minutes में वो 2-3 बार सुन के तेरे को समझ में आ जाएगा कैसे सरतेज लगता yeah so we were everybody is joined we were understanding the basic principles of exchanges so all this theoretical part at least I have told you first 2 questions we have covered now we will see this theory into practical. So I will go to our chess problems first, 76 onwards. And now, while solving the problems, all this theoretical part will come into play. Time and again it will come. And then I will explain you that particular time also. Do not worry about that. Where are the examples of all these things? Every time you will get the examples. Okay? But you see that ये सब जो लिखा है वो आपके दिमाग में जाना चाहिए खाली कागज पर नहीं रहना चाहिए and it should be in your mind all the time then only you will at least become not a great player but a good player. Everybody can see. One minute. Yeah, everybody can see. Now it is check and checkmate 75th problem. Right? So this problem we have solved. White to move, play the move which gives checkmate, and this is what we solved. Next, we will complete 87 today. White to move, play the move which gives checkmate. Answer in your notebook. Not to be shouted at me. Don't open the answer. Please mute yourself. Here, look at the board. This king cannot go over h8 because of bishop. Not over here, family member.
and all these three places f7, g7 and h7 are guarded by rook. So in fact आपको इसको खाली चेक देना है, but this check cannot be from here because यहाँ पर चेक देंगे तो again this h8 square will be available क्योंकि ये खुद ही अपने बिशप को रोक रहा है. So this will be available. So this check is not good, but this check is there. Simple. So pawn h7 is the right answer. White to move, checkmate. These are simple positions basically. यहाँ पर you will find that black is having queen and pawns 1, 2, 3, 4, 5, 6. That means 16 points. And white is not having queen, but 3 pieces. 5 and 3, 8 and 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 points. So position is equal. And even though it seems equal, black may win. But the black's 2 pawns on a7 and b7 are causing problems. So this is what we call it as a position. Position is bad for black. Here the answer is very simple. Now this escaping c7 is guarded by this. Then d7 also guarded by this. Here it cannot come, family member. So now you have to give check from this line, which is easily can be given, safe check. So answer is rook e8. Black to move, checkmate. Five checks are available. Again here situation is similar. Black 2 rook है और white के पास एक queen है, equal. But the position is bad. Point wise it is equal, but position is bad. Bad for whom? Bad for white. Sir, done. Done. Very good. Keep it yourself. Sir, done. Yeah. Okay, let me see. Sir, No, I don't want. Sir, I've got 3 mates. Sir, I've got 3 checkmates. Yeah. Good. I want this answer from Avani. D2. Bishop. Rook. There is no bishop. Rook D2 is a wrong answer. Okay, Tejas. Knight G1. Correct. Here, look at, you have to see all the checks first. Which are the check available? This is the check. Yes. Then this is the check. Yes. So same check can be given by this rook also. Okay. So 1 and 2 basic checks are there. But in both the check, now king can kill this, capture this. This has no support basically. So check from rook is bad. Got it? So how the check is available? Check is available from here. Now यहाँ पर एक चीज नोटिस करना है आपको, नाइट उसकी जगह से जब जाता है, जहां पर समझो यहाँ पर गया एग्जाम्पल, तो वो
जिस जगह को छोड़ता है उस जगह को सपोर्ट या तो कंट्रोल करता है। कोई भी पीस अपनी जगह छोड़ता है तो वो जगह को कंट्रोल भी करता है। छोड़ने के बाद जब वो पर्टिकुलर स्क्वायर पर बैठा है तो उसको खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। यू अंडरस्टैंड इट? सो दैट मीन्स ये जो नाइट है आपको क्या करना है, इसको चेक भी देना है और ये स्क्वायर को कंट्रोल करना है। तो इट कैन बी डन दिस वे, दोनों जगह कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, बट दिस स्पेस इज नॉट सेफ। या तो ये मारेगा या तो ये इसको मारेगा। सो द अदर वे इज दिस ओनली। समजला ओनी? येस सर. तुम्हाला काय सांगितलं मी, चेक तुम्ही फाइंड आउट करताना सगळ्यात पहिली गोष्ट विचार करायचा आहे की दॅट चेक इज सेफ ऑर नॉट. आणि सेकंड गोष्ट, किंगच्या पळायच्या गोष्टी ज्या आहेत, किंग काय काय मरतंय, आपलं काय काय मरतंय आत्ताच आपण शिकलो ना. व्हॉट एम आय लुजिंग? द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हॉट एम आय लुजिंग? हियर ब्लॅक विल थिंक आय एम लुजिंग माय नाइट. सो हाउ टू सेव इट? सिंपल क्वेश्चन. सेविंग बाय here run away or attacking, counter attacking also हो गया and run away, both things at a time. See our अजून एक आन्सर आहे. yes बाळा, बोल अजून काय आन्सर आहे, बोल बाळा. E1 एक मिनिट हा. तुम्ही नाईट आहे ना, नाईट तिकडे ठेवायला पाहिजे होतं सर. कुठे? नाईट तिकडे ठेवा आणि इथे? E1 पण मग इथे चेक नाही. नाही नाही सर इकडे नाही. हे रूफ आहे ना, रूफ त्याला E1 ला ठेवा, मग चेक एंड द मेट होईल. नाही पण मग इथे जर का रूप ठेवला ना तर हा किंग याला मारेल ना, किंग याला मारेल बाळा. मग देयर इज नो ओके चेक. ओके ओके. Yeah, good try beta, good try. So you understand, every time what I have given you just now will be useful to you every time, provided you make use of it. Okay sir. White to move, give checkmate. But it's very. No answer loudly. You have to write in your notebook or you keep it to yourself. Let everybody solve. Shri Kirtan. Here again, see, same theory. What am I losing? I am losing this. Common sense. I am losing this. I am losing this. Queen is going to kill this. So I am losing this. I am losing this. Nothing else. Okay. So out of these two, Sir, I out can of tell you these two answer. bed area, I am telling something. You have to listen. I am losing this and this, out of which this is already supported perfectly well. Queen is killing and this is supported. But I am losing this. No support is there. I have to save. So saving this means taking to different square. Cannot take over here under attack. Can take over here, can take over here, can take over here, can take over here. Out of which this is giving check, safe and mate. If you take knight over here, h6, this will kill. So h6 is not safe. This is safe. Now king cannot come up. And ये line में तो मैंने कल आपको यही position बोला था ना, ये this position, you try to remember this position. Many a times you will find there is a mate over here. This position. For your information, this particular position and bishop in the middle, bishop here, अभी यहाँ पर pawn है. So this position is called as a dragon position. Nowadays, dragon is the word very much pronounced on the TV or every news channel. You find dragon, the Chinese dragon.
So in chess also there is this dragon bishop. This bishop is called as dragon bishop. At this position, there is an opening in chess, or that position is called as dragon bishop or fianchetto. There is another word for that particular position is fianchetto bishop or dragon bishop. वो बाद में आ जाएगा. Fine. So let's move to next problem. White to move. Give checkmate. This is simple. चेक कौन कौन कहां से दे रहा है वो पहले फाइंड आउट करना है. सेकेंडली राजा के भागने की पोजीशन क्या है वो फाइंड आउट करना है. एंड थर्ड सेफ चेक फाइंड आउट करना है. Sir, done. See, now check, this check is available, but यहाँ पर चेक दिया तो राजा नीचे निकल जाएगा यहाँ पर this position में. Then this check is also available, but यहाँ पर ये रुक इसको मारेगा. Okay. Then this check is also available. ये चेक में मेट है. And also there is another mate, I think. No, not mate. ये यहाँ पर, but ये mate होता था लेकिन ये queen मारेगा ना इसको. Not possible. So this is the mate. Easy है. This was easy. पर सर क्वीन नहीं मार सकता सर, वो हॉर्स मार देगा उसको. हाँ हाँ. Queen क्यों नहीं मार सकता? एक मिनट सर, पीछे बैक किया ना सर. हाँ ये क्या? देखो सर, सर हॉर्स है उधर, हॉर्स मार सकता है उसको क्वीन और को. मार सकता है, लेकिन क्या क्वीन अगर दोनों का क्वीन जाएगा अगर इसमें हॉर्स मारेगा तो बाद में ये जो बिशप है ना ये बिशप इसको मारेगा और ये क्वीन को वापस मारेगा तो किंग भी इसको वापस मार सकता है. सो व्हाइट इज लूजिंग क्वीन एंड नाइट और क्वीन एंड दिस. सो व्हाइट इज लूजिंग points again, more points. Yeah, white to move, checkmate. Sir, it's the same position. No, position is same but little difference is there. See, these Sir, are you turn to the. Sir, you turn to the position just now. yeah. Here this check is Sir. but bad because rook is there. Then this position, this check is also bad because rook is there. But the best way is this. यहाँ पर I would like to convert this position into a two move problem. Let's see. मैं डेमो बोर्ड पर लेता हूँ. नहीं ज़्यादा टाइम नहीं है. Okay. You remember 81 problem number 81. Our next session I will have this converted into two move checkmate. We'll move. Black to move, give checkmate. भागने का रास्ता ये है,
ये है, नॉट ये है भागने का रास्ता। E8, E1 यहाँ नहीं आ सकता है, E2 और यहाँ भी नहीं आ सकता है G2 because of this. So the simple way is you have to give check, that's all. At the same time ये भी बंद करना है आपको E1. So this check is there of course, but ये check में क्या होगा, king will come to E2, E1. So the best way is this. Now ये खुल गया रास्ता. So this is now under pressure from queen. और सर हॉर्स भी मार सकते हैं उसको। कौन सा हॉर्स मारेगा उसको? सर वो पीछे ब्लैक हॉर्स ब्लैक भी आया हॉर्स, ब्लैक हॉर्स ब्लैक को कैसे मारेगा बेटा? फैमिली मेंबर। हाँ सर। Next problem. White to move. Here a different concept is utilized. Very different concept. ये concept आपको मैं next session में भी समझाऊंगा. I will write down problem number 83. Okay. Here the simplest one is this. Now there is a check. Nobody can come in it. Even this also cannot come over here because ये rook अगर बीच में है तो ये rook से वापस check आता है. Okay. So and इसको कोई मार भी नहीं सकता है, कोई बीच में भी नहीं आ रहा है. तो इवन दो ऑन बोर्ड इसके पास क्वीन है, दो रूक है, बिशप है, और इसके पास दो रूक है और दो बिशप है, फिर भी व्हाइट का पोजिशनल एडवांटेज अच्छा है, इसके लिए व्हाइट जीत रहे हैं. So here we will stop. Today I taught you the best part of chess. You have to revise all those things which I have taught you today. Next session we will first come to problem number 83, which I want to convert it into a two-mover problem because वहाँ पर आपको लेके जाना है मुझे how to plan, and then this problem number 85, where a different concept I have to tell you. Okay, what concept? That वो दिखने में एकदम simple दिख रहा है, लेकिन उसमें एक concept use किया है, वो concept अपने को सीखना है. Then you can use that concept very often. Chess is the thing where you have to use different concepts. So for today, bye bye. You like today's session very much? Yes. Yes, sir. Bye bye. सर